Hello all. So in today's session, we are going to see how to work with XML in CShart. So today we will cover like what is XML and what is the syntax of XML. Then how to generate XML file using CShart code. Then we will move to like write dataset to XML file using ADO.NET. Then write data table to XML file using ADO.NET. Means basically get the data from SQLDB into the dataset or data table and then put it into the XML file. So how we can do that? And then the next we will see like read data from DB using XML read XML method. Okay. Then next we will see like read XML in C# and store it to the dataset table. Then next we will see how we can read XML properties using XML text reader class. Okay, so let's start with introduction. So first point is like what is XML? So XML stands for Extensible Markup Language, and XML is a markup language much like HTML. So आप लोगों ने HTML में काम किया है, राइट? तो HTML में मतलब स्टार्टिंग टैग होता है, उसके बाद एंड टैग होता है, उसके बाद मतलब हर टैग का एक स्टार्टअप टैग होता है और एक एंड टैग होता है, राइट? द सेम थिंग इज हैपन इन द XML आल्सो. तो यहाँ पे भी बेसिकली वी हैव अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग्स. So XML was designed to store and transport the data. So the basic purpose of XML is like we can like store data into the XML. So it is kind of database. So it is kind of XML file database, and we can store it and we can transport this to anywhere, like using FTP or using email. We can send this file from one location to other location. So it is like a self descriptive language. Self descriptive मतलब क्या? मतलब it is a human readable and it is human understandable format, and it is also machine understandable format. मतलब आप भी अगर XML file पढ़ोगे तो you will understand what type of data is stored into that and how it is stored. It is also a W3 3C recommendation. Okay. So the syntax of XML is like यहाँ पे एक syntax दिया है, यहाँ पे एक start tag है जैसे note, then उसके बाद में 2/2 है, right? उसके बाद एक next tag है from and /from, उसके बाद है heading/heading. तो यहाँ पे क्या है, ये जो note tag है it is our root tag, and वो root tag के अंदर है यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये अलग अलग tags है, right? So basically this is our root tag and these are the child tag of this root tag. तो यहाँ पे मतलब ये इसको अगर आप कोई SQL टेबल से अगर कंपेयर करोगे तो you can say that like note is your table name and these are your columns: to, from, heading, body. So this is how we can store data into the XML file. अभी जो मतलब there is some difference between XML and HTML. So XML was designed to carry data with focus on what data is. मतलब basically we can like transport the data using XML, and HTML was designed to display data with the focus on how data looks. मतलब HTML का काम क्या है? To show or to design the forms or show the data to the user, right? XML tags are not predefined like HTML tag. मतलब HTML में एक fixed tag है जैसा heading है, body है, या फिर title, head tag. मतलब there are some fixed tag which are defined by HTML language, but XML में ऐसा नहीं है. XML में आप मतलब we can define our user defined tags. ये सब user defined tag है, but it has a some format. मतलब अगर किसी tag का अगर कोई मतलब starting tag है तो उसका ending tag भी होना चाहिए, right? मतलब यहाँ पे एक फॉर्मेट में हम लोगों ने यहाँ पे मतलब ये XML का कोड यहाँ पे राइट किया है, राइट? मतलब यहाँ पे नोट अगर स्टार्ट हो रहा है तो इट शुड बी एंड समवेयर, बट इट शुड नॉट एंड समवेयर बिटवीन द एट रॉन्ग प्लेस, राइट? मतलब जैसे मैं अगर इसको यहाँ पे एंड करूंगा and if I am writing body outside this note, it is mean that body has no what would I say base tag, right? So it should always come inside this tag, right?
अभी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू दिस इन नोटपैड। मतलब यहाँ पे एक बेस टैग है अपना नोट, राइट, उसके अंदर भी एक चाइल्ड टैग है जैसे प्री नोट, राइट, और उसके अंदर ये सब चीजें है, राइट। तो अगर ये चाइल्ड टैग अगर यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये इसके मतलब नोट टैग के पहले खत्म होना चाहिए इस तरह से। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ एक्सएमएल फाइल, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सएमएल फाइल का ट्री स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस, मतलब जैसे रूट टैग हमारा मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, देन कौन सा पेरेंट टैग है, उसके बाद में कौन सा चाइल्ड टैग है, ये सब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद में इसके अंदर जो लैंग्वेज है, टाइटल है, ऑथर है, ये सब मतलब उसके एट्रीब्यूट्स है, राइट। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे ये वेरी फर्स्ट वी डिफाइन द एक्सएमएल वर्जन एंड उसका एनकोडिंग टाइप जो भी है, तो वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो भी डेटा है, वी विल डिफाइन द डेटा इन दिस फॉर्मेट, ओके। यहाँ पे मतलब सेल्फ डिस्क्रिप्टिव सिंटैक्स मतलब क्या, इट इज रीडेबल फॉर्मेट, राइट। मतलब ये अंडरस्टैंडेबल है, हमें यहाँ पे पता चलता है कि दिस इज आवर लाइक रूट टैग, देन दिस इज आवर कॉलम्स, राइट। This is like one root tag and this is the information of book. So book is having like information like title, author, year and price, okay. Okay, so the next point is like namespace which are used to work with the XML is the .NET framework provides the dedicated namespace to work with XML documents called system.xml. So system.xml is the namespace which is used to work with the XML file, okay. Okay, so let's start with like practical examples. So first is like how to construct XML in C# code using XML writer class. ठीक है, यहाँ पे मैं एक विजुअल स्टूडियो का एक छोटा सा प्रोजेक्ट ले लेता हूँ. We will take one console application to understand the examples, and I will call like work with. ठीक है, यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन में ले लिया XML वर्किंग XML इन C#, राइट. ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल कंसोल एप्लीकेशन हमने लिया है और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाउ वी कैन वर्क विद XML फाइल इन C# कोड. यहाँ पे मैं एक फोल्डर ऐड कर देता हूँ. सो राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट एंड ऐड फोल्डर, and I am calling this folder as XML files, right. And this is our solution root folder, and then this is our project root directory. So if I have to get some data from this folder, so I will start I will consider this is my root directory, and then I will start with these folders. Okay, so the first point is like write XML in C# code using XML writer class. So there is a class which is provided by XML system.xml namespace, and that class is XML writer. So it is used to write the data into the XML file. The XML writer class provides functionality to write fast, forward only, not cached XML streams. The XML writer class also validates and verifies element and attributes namespaces, and also ensures that the newly generated XML is well formed or not. The XML writer creates a static method
is used to create a XML writer. Okay, so it is a static method actually, XML writer, and it is used to create a XML file. To create a method, the create method has several overloaded forms and can save the generated XML into the various objects. So this is the example which is used to write the data into the XML file. So let's see this in action. Okay, I am defining one method here, private void XML writer method. यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन है प्रोग्राम, उसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे ये स्टैटिक मेथड, दिस इज आवर स्टार्टअप मेथड, और यहाँ पे मैंने ऊपर एक मेथड डिफाइन की. सो आई हैव कॉल्ड दिस मेथड XML write method, and there are some code which has I have added inside that method. तो यहाँ पे जो ये क्लास है XML writer, so I am resolving this. यहाँ पे आपको क्या करना है, if we have to use XML functionalities, we have to add this namespace. We have already seen this in this document that we have to add this namespace system.xml. अगर ये हम लोग ऐड करेंगे तो वी विल गेट एन एक्सेस ऑफ XML राइटर क्लास. इफ आई यहाँ पे अगर आप F12 करके देखोगे तो यू विल सी दैट XML राइटर हैज अ lot of methods which are provided by .NET. So we are going to see some of them today in the today's session. So let's start with like XML writer class. So if we have to start, if we have to write data into the XML writer, then we can use XML writer class. So यहाँ पे XML writer equal to XML writer dot create. So as we have seen, it is a static method and provided by XML writer class, and it is used to create the XML file on the on the physical memory, right? So I have already added one folder here, so I'm adding this path /. यहाँ पे जैसे मैंने बोला आपको कि we have to consider this is our root directory, so I will call indicate root directory with double dot. So we do this in the C# by putting double dots. Okay, then ये folder का नाम, then we have to define a file name which we have to write, right? So we have to create one file and I'm calling this file as a books. So I have to create one file with books name, right? And also just उसका जो extension है वो है XML. Okay, so let's put debugger here. ये फाइल मतलब मेथड को आप यहाँ से कॉल कर सकते हो, p dot this method. Okay, so basically it will create a file, and it will also create a writer object. Okay, so ये ऑब्जेक्ट को एक मेथड है write start element, so it will write the start element into that file. Okay, so start element is like book detail, right? Then यहाँ पे मैंने एक for loop लिया है because I have to write multiple multiple data into the book detail. So in book detail I have like again one more start element, that is book, and in that book I have some columns like title, author, publisher, and price, and I am putting some values against these columns. So it has a that write element string method, and then at the end of we have to use write end element method, and then we have to use write flush. Okay, so flush is used to flush the data whatever which was stored into the write object. So it will like execute for 10 times because we have added 10 iterations into the for loop.
ठीक है, इसको रन करके देखते हैं हम लोग। Okay, before starting the program, let's see if there is any file available in this folder. So ये folder का location है, यहाँ पे कोई फाइल है नहीं अभी, right? So let's execute the program. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ से वो मेथड कॉल की which will write the XML writer, right? Could not find the part of the path C colon like drive. Wait, it is not able to find the path. Let's try this again. Okay, this syntax is not working for this. Let's put the complete path. ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा पाथ डाल रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। इसके लिए कुछ और मेथड होंगे, सर्वर डॉट मैप पाथ या फिर समथिंग एल्स, सो वी विल सी दिस लेटर ऑन। यहाँ पे अभी जो मतलब ये बैकवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश का प्रॉब्लम हो जाता है डॉट नेट में, तो यहाँ पे आपको एट द रेट ऐड करना है, इट विल फॉर्मेट द स्ट्रिंग। ओके, ठीक है। सो नाउ द फाइल might have been created at the specified location. Let's see it. Okay, the file is created here, right? And it is having like XML extension. It is having no data right now. Okay, so तो यहाँ पे मैंने क्या किया, राइटर डॉट राइट स्टार्ट एलिमेंट मैंने ऐड किया, राइट? ठीक है, सो लेट्स सी इफ इट इज एडेड इनटू द फाइल। यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके आप क्या करो, उसको नोटपैड में ओपन करो अभी के लिए। So it has not written yet. Let's see if it is done at the end of the code. ठीक है, यहाँ पे उसके बाद राइटर डॉट स्टार्ट एलिमेंट में ऐड किया, फिर बुक, उसके बाद यहाँ पे उसके अंदर कुछ कॉलम्स ऐड कर दिया, राइट, और विथ सम डेटा। सो इट विल रन फॉर 10 टाइम, तो मैं यहाँ पे इसको खत्म कर देता हूँ, राइट। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। लेट्स सी इफ देयर इज सम डेटा इनटू द XML फाइल। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा राइट हुआ है, बिकॉज यहाँ पे इसका जो साइज है वो ज्यादा दिखा रहा है, मतलब 2 KB दिखा रहा है, राइट। इसको नोटपैड में ओपन करो। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब उसने फाइल राइट कर दी है, यहाँ पे वर्जन वो ऑटोमेटिक उसने ले लिया, राइट। देन यहाँ पे जो रूट एलिमेंट था अपना स्टार्ट एलिमेंट, दैट इज बुक डिटेल। अगेन दैट बुक डिटेल इज हैविंग इट्स चाइल्ड एलिमेंट, दैट इज बुक। ठीक है, इस तरह से ये बेसिकली फाइल राइट होती है इसमें डॉट नेट में, अगर आप XML राइटर क्लास यूज करोगे तो। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वी आर स्टोरिंग बुक डिटेल एंड ईच बुक टैग इज हैविंग ऑफ वन सेट ऑफ रोज डेटा, राइट। ठीक है, सो इट इज लाइक आवर SQL डेटाबेस। मतलब SQL डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल डिफाइन करते हैं, तो वो टेबल का नाम क्या होगा, जैसे बुक डिटेल, राइट। उसके बाद उसके अंदर क्या होता है, बुक का डिटेल होता है, राइट। तो वो ईच कॉलम लाइक ईच टेबल हैज मल्टीपल कॉलम लाइक टाइटल, देन ऑथर, देन पब्लिशर। तो सेम वे यहाँ पे डेटा स्टोर होता है XML फाइल में। ओके, ठीक है, समझ लगा XML राइटर क्लास म्हणजे कशी XML फाइल जनरेट करतात ते। हॅलो, ओके, ठीक आहे, एवढंच याच्यामध्ये, बाकी काही नाही आहे पहा। ठीक आहे, हे झालं XML राइटर मेथड, बरोबर आहे। त्याच्यानंतर इसके बाद आहे, आता इथं आहे ना त्यांनी XML रायटरचे काही सेटिंग वगैरे दिल्यात पहा, तर तुम्ही थोडे गो थ्रू करा, तुम्ही अंडरस्टँड करा, नाही का, ते XML रायटर वगैरे कसं त्याच्या सेटिंग वगैरे कशा तुम्ही यूज करू शकता, नाही का, किंवा मग त्याचा XML रायटर क्लास थ्रू तुम्ही त्याच्या प्रॉपर्टीज वगैरे कशा रीड करू शकता। आता इथं काय केलंय,
एक मिनिट, इथं कुठेतरी आहे पहा नाही का, इथं XML रायटर क्रिएट केलाय. ठीक आहे, इथं पण त्याने राईटच केलंय. ठीक आहे, इथं फ्लश अँड क्लोज मेथड बद्दल सांगितलं. द फ्लश मेथड फ्लशेस व्हॉट एव्हर इन द बफर ऑफ द अंडर रायटिंग स्ट्रीम अँड ऑल्सो फ्लशेस द underlying string. Okay, the close method closes the stream and the underlying. You must directly or indirectly close the XML writer. तर या दोन मेथड आहेत. तो काय करतो, डेटा वगैरे फ्लश करतो जो पण म्हणजे त्याच्या अंडरलाइंग असेल नाही का, वेन इट वॉज एक्झिक्युटिंग. ठीक आहे, इथे एक XML रायटिंग, XML मध्ये कॅरेक्टर कसे राईट करायचे त्याचं एक एक्झाम्पल दिलं. हे पण तुम्ही ट्राय करा. त्याच्यानंतर आता दुसरी एक मेथड आहे पहा, राईट XML म्हणून. ठीक आहे, तर ती राईट XML आपण यूज करू शकतो डेटा सेट किंवा डेटा टेबल बरोबर. त्याचं एक इथं एक एक्झाम्पल दिलंय, ते आपण ट्राय करू आता. लेट्स ट्राय दिस एक्झाम्पल. ठीक आहे, मी काय करतो आता, इथे अजून एक मेथड डिफाईन करतो. डेटा सेट टू XML, राइट. और यहाँ पे मैं ये कोड डाल देता हूँ इसके अंदर. ठीक आहे, आता हे SQL ADO.NET चं कोड आहे, तर याला ते काही नेम स्पेसेस वगैरे पाहिजे आपल्याला, बरोबर आहे. मी इथं ऍड करतो वरती. तो हमें सिस्टम डॉट कनेक्शन, सॉरी सिस्टम डॉट SQL क्लाइंट चाहिए, राइट. सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, और उसके बाद हमें चाहिए सिस्टम डॉट डेटा. है क्या यहाँ पे? नहीं है. सिस्टम डॉट डेटा. ठीक है, तो ये दो नेम स्पेसेस चाहिए, राइट. ये मेथड बाहेर आली बा आपल्याकडून, क्लासच्या काहीतरी चुकलंय आपल्याकडून. कोड रनिंग आहे आपला. ठीक आहे, ठीक है, तो सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट. ठीक है, यहाँ पे अगर ADO.NET में काम करना है हमें, तो वी हैव टू ऐड दिस टू नेम स्पेसेस, राइट. यहाँ पे एक मेथड ऐड की है मैंने, प्राइवेट वाइड डेटा सेट टू XML फाइल. मतलब यहाँ पे बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गेट द डेटा फ्रॉम SQL सर्वर, पुट इट इनटू द डेटा सेट और डेटा टेबल, एंड देन वी हैव टू राइट इट टू द XML फाइल. तो ये हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड अ कनेक्शन हियर. So I have added this connection class, and we are already familiar about means how to create connection into the SQL, right. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, we will define the connection. Then यहाँ पे क्या किया था मैंने, basically we use procedures, but यहाँ पे मैंने एक hard code query मतलब यूज की है. तो यहाँ पे I am using employee demo table from this database, our demo DB database. यहाँ पे SQL data adapter का एक ऑब्जेक्ट किया, और उसको क्या क्या किया यहाँ पे, SQL connection and SQL query pass की, right. So when it will execute, like when it will call the fill method, it will get the data from database and put it into the data set. यहाँ पे डेटा सेट में सब डेटा आ जाएंगे, और ये डेटा सेट को मैंने एक नाम दिया टेबल को, बस, राइट. उसके बाद यहाँ पे डेटा सेट हैज one method that is write XML, but to get the access of this method we have to add this namespace, XML namespace, right. System.xml. तो यहाँ पे जो मेथड, इट विल डायरेक्टली गेट द डेटा फ्रॉम डेटाबेस एंड पुट इट इनटू द XML. ओके, यहाँ पे मैं वो पाथ अपडेट कर देता हूँ. फाइल्स, फाइल नेम emp demo. ओके, p डॉट व्हाट. मी आता ह्या मेथडला कमेंट करतो आणि फक्त एवढे एक एक मेथड आपण एक्झिक्यूट करून बघूया. ठीक आहे,
तो यहाँ पे क्या होगा, कनेक्शन क्रिएट होगा, इट विल गेट द क्वेरी इनटू द स्ट्रिंग फॉर्मेट, और यहाँ पे वो क्वेरी एसक्यूएल डेटा अडेप्टर को पास कर दी, राइट। यहाँ पे ये जो है डेटा सेट, it is a collection of rows and columns, right? It is collection of tables actually. It can contain multiple tables. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, डेटा सेट में यहाँ पे मैंने ये मतलब एक डेटा आ गया डेटाबेस से, राइट, और उसको एक टेबल को नाम दिया यूजर डिटेल्स, और यहाँ पे डेटा सेट हैज अ राइट एक्सएमएल मेथड, तो यहाँ पे बस आपको पाथ भेजना है और वो फाइल, राइट। सो इट विल डायरेक्टली राइट द फाइल इनटू दैट लोकेशन। यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो गई, ओपन इट विद द नोट इनटू द नोटपैड फाइल। तो अभी एक यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये इसमें बहुत ज्यादा डेटा है, राइट, इसलिए वो इतना टाइम ले रहा है। सो देर आर लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स इनटू दैट दैट टेबल, तो इसलिए ये मतलब ये बहुत बड़ी फाइल क्रिएट हुई है, ये थोड़ा हैंग भी करता है सिस्टम को, इस तरह से ये फाइल जनरेट हुई है, राइट। तो इस तरह से आप डायरेक्टली डेटा मतलब डेटाबेस से डेटा लेके यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है, एक्सएमएल फाइल में, ठीक है। यहाँ पे ये जो नीचे का एग्जांपल, यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, डेटा टेबल में लेके उसको राइट किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट एसक्यूएल डीबी टू एक्सएमएल फाइल यूजिंग एडीओ डॉट नेट यूजिंग एग्जीक्यूट रीडर मेथड। तो यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट रीडर एक मेथड है, वो यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डेटा रीड कर सकते हैं फ्रॉम डेटाबेस एंड पुट इट इनटू द एक्सएमएल। प्राइवेट वॉइड देन ये मेथड ले लेता हूं मैं, एग्जीक्यूट रीडर नाम की एक मेथड है, एग्जीक्यूट एक्सएमएल रीडर। तो वो यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग वी कैन रीड डेटा फ्रॉम डेटाबेस एंड पुट इट इनटू द एक्सएमएल फाइल, ठीक है। इसको कमेंट करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, ई डॉट व्हाट, आता या केस मध्ये फक्त एवढाच डिफरन्स आहे भाई, इथं पण आपण एसक्यूएल कनेक्शन केलं, पण इथं क्वेरी जी बनवली ती बघा आता, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई डेमो फॉर एक्सएमएल रॉ एम्प्लॉई डेमो आणि रूट एम्प्लॉईज आणि एलिमेंट, असं आपण त्याच्यामध्ये ऍड केलंय पाहिजे। हे एक एसक्यूएल क्वेरीचा सिंटॅक्स आहे, तो तुम्ही बघून घ्या। तर बेसिकली जर आपण एक्सएमएल जर रिटर्न केलं डेटाबेस मधून, तरच आपण एक्सएमएल रीडर मध्ये डेटा रीड करू शकतो, ठीक आहे। त्याला एक्सएमएल फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला डेटा रिटर्न करावा लागतो। तर ही क्वेरी काय करा तुम्ही, ऍज इट इज फायर करून बघा डेटाबेसला, तो तुम्हाला समजेल पहा, तो एक्सएमएल फॉर्मॅट मध्ये डेटा रिटर्न करतो। मी तुम्हाला दाखवतो इथं, समजलं नाही बघा, असं एक्सएमएल तयार केलं बघा त्याने पूर्ण डेटाचं, समजलं। आणि तो एक्सएमएल फॉर्मॅट मध्ये डेटा काय करतो, रिटर्न करतो। इथे मी तुम्हाला कॉपी पेस्ट करून दाखवतो, समजलं। ठीक है, तो एक्सएमएल फॉर्मेट में हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू रिटर्न द डेटा फ्रॉम डेटाबेस। देन यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट एक्सएमएल रीडर मेथड यूज की है, तो आई हैव टू यूज कनेक्टेड आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड दैट मेथड विल रिटर्न होल डेटा इनटू द एक्सएमएल रीडर ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे वो डेटा आ जाएंगे। देन व्हाट वी हैव टू डू, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट एक हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट ऑफ क्लास का। वी हैव टू राइट द होल एक्सएमएल इनटू द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ओके। देन we will write this data into the this file, okay। uh, let me change the path of the location, ठीक है। यहाँ पे ये फाइल रीड राइट करेंगे, लेट्स रन दिस अगेन, ठीक आहे। तर त्याने फाइल बनवली असेल ना, असं आपल्याला एक्सपेक्टेड आहे, बघू आता। हा फोल्डर येतो, राइट।
ठीक आहे, तर इथं फाईल क्रिएट झाली बरोबर आहे, आणि याच्यामध्ये त्याने पूर्ण डेटा राईट केलाय. ठीक आहे, समजलं. So this both way we can write data into the XML file. ठीक आहे. याच्यानंतर आता XML फाईल मधून डेटा रीड कसा करायचा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम XML फाइल. सो देयर इज वन मेथड दैट इज रीड XML. ठीक है, हम लोग को ट्राई करते हैं एक बार. प्राइवेट वाइड रीड XML फाइल. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय फाइल रीड करेंगे यहाँ पे. इधर एम्प्लॉय और एक कोई तो छोटी फाइल हम लोग रीड करते हैं. दिस इज नॉट अ स्मॉल फाइल विच वी क्रिएटेड, राइट. ये फाइल है. वी विल रीड दिस. ओके, ठीक है. यहाँ पे सिंपली क्या करना है हमें, वी हैव टू जस्ट गेट द पाथ इनटू द लाइक स्ट्रिंग वेरिएबल, देन and there is a method that is read XML and which comes under the dataset class. So we have to just pass the path to read XML file which is in the string format, and it will read the data and put it into the dataset. ठीक है, यहाँ पे अब ये लोकेशन पे जो बुक फाइल है हम लोगों ने वो क्या किया, उसका पाथ लिया और यहाँ पे डेटा सेट को पास कर दिया, तो यहाँ पे डेटा सेट में वो डेटा डायरेक्ट आ जाएगा. ठीक है, इस तरह से आपने कोई भी फाइल रीड किया तो वो सेम इट विल वर्क फॉर ऑल फाइल्स. उसके बाद और एक क्लास है दैट इज XML टेक्स्ट रीडर क्लास. तो ये क्लास से आप क्या कर सकते हो कि वी कैन टेक लाइक बेसिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम द XML फाइल्स. तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे टेक्स्ट रीडर डॉट नेम देन बेस URL लोकेशंस, ये सब आप क्या कर सकते हो, XML फाइल का डेटा फेच कर सकते हो. ठीक है, ये एक ट्राई करते हैं हम लोग लास्ट. टेक्स्ट रीडर क्लास है, राइट. ये एज अ पैरामीटर दिया तो भी चलेंगे यहाँ पे. दिस पे basically it will return the properties of from the XML फाइल. तो टेक्स्ट रीडर में नेम में यहाँ पे ब्लैंक है बस, बेस URL और मतलब जो लोकेशन पे फाइल है उसका URL आएंगे यहाँ पे, राइट. उसका एट्रीब्यूट काउंट 0 है बिकॉज हम लोगों ने कोई एट्रीब्यूट काउंट ऐड नहीं किया था. डेप्थ भी 0 है. लाइन नंबर 1 मतलब ये फर्स्ट नंबर का वो डेटा रीड कर रहा है. ठीक है, नोट टाइप है, तो यहाँ पे व्हाइट स्पेस आया मतलब ब्लैंक है एक्चुअली है, और वैल्यू है. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मतलब क्या है, एक लाइन है वहां पे, राइट. सो दिस वे वी कैन रीड द बेसिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम द XML. ठीक है,